Hello dear students, how are you all? Now, I am going to discuss today in this class computation of income from salary. Salary is the first head of the total income. Salary is the first head of the total income. Under this, those remuneration are included which is based upon the relationship of employee and employer. So dear students, today class I Dr. Lal Babu Jaiswal, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University, Varanasi, going to discuss the case study regarding to the computation of income from salary. The first case is related to the Mr. Goyal. Mr. Goyal received the following emoluments during the previous year ending 31st March 2025, जिसमें बेसिक पे 4 lakhs, डियरनेस अलावेंस 1,50,000, कमीशन 1 lakh, entertainment allowance 40,000, medical expenses reimbursed 25,000 and professional tax paid rupees 2,000. Professional tax rupees 2,000 is given. In this amount 1,000 is paid by the employer. 1,000 is paid by the employer. So dear students, this question is related to the income from salary. So dear students, Mr. Goyal also contributes rupees 5,000 towards recognized provident fund. He has no other income. उसके पास कोई और इनकम नहीं है. डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ गोयल इज द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, the entertainment allowance will be deductible at least of the following 3 amount. First, actual received amount. Second, maximum limit 5,000. Third, 1/5 of basic pay. So dear friends, in this question, basic pay 4 lakhs. Basic pay will be taxable under the head of salary. Dearness allowance is also taxable under the head of salary, but dearness allowance is not given under the part of retirement benefits. तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि dearness allowance will not be considered at the time of computation of house rent allowance, value of rent free accommodation and other facility. Commission is also given, but commission is given in the form of amount, not given in the form of percentage. If it is given as a part of percentage, so at the time of computation of house rent allowance, contribution to recognized provident fund, at the time of those calculation it will be given. So dear students, medical expenses reimbursed. Medical reimbursed means any expenses which is met by the employer, in favor of the employee. Professional tax is a deduction under section 16 subsection Roman 3rd. If professional tax is paid by the employer, so first it will be included in the volume of salary, so then it will be deducted as a deduction under section 16 subsection Roman 3rd. So now in this question is solved under the default tax regime under section 115 BAC subclass 1A. So dear students, computation of income from salary, basic salary 4 lakh, it is included. Dearness allowance 1,50,000, it will be included. Commission rupees 1 lakh, it will be included. Entertainment allowance 40,000, it will be included. Employee contribution is not included, but employer contribution is included if it is up to, if it is excess and over 12% of salary means.
medical expenses which is reimbursed by the employer will be also included at the time of computation of income from salary. Professional tax which is paid by the employer will be included at first in the volume of the salary, then it will be deducted as a deduction under section 16 subsection Roman. Third, if it is deducted when the employee adopt the optional tax regime. When the employee adopt the default tax regime or new tax regime under section 115 BAC clause 1 capital A, तो such types of employment tax is not deducted. So in this question we will include rupees 4 lakh basic salary, 1,50,000 dearness allowance, 1 lakh commission, 40,000 entertainment allowance. Entertainment allowance is not also deducted as a deduction because in this case employee adopt the new tax regime. Employee adopted the default tax regime under section 115 BAC. So show entertainment allowance is not deductible under section 16 subsection Roman 2nd. Entertainment allowance is not deducted under section 16 subsection Roman 2nd. So now gross salary by adding the various types of item like as a medical expenses, professional tax, the gross salary is rupees 7,16,000. Out of 7,16,000, rupees 75,000 is deducted as a standard deduction. In this question is solved from such types of rule which is issued by the government from 1st April 2024, and from 1st April 2024 standard deduction is increased under the default tax regime from 50,000 to 75,000. So in this question 75,000 is deducted. So after deduction of 75,000 from 7,16,000 to 6,41,000 is income from salary. 6,41,000 is called the income from salary. So dear students, in this question note is given. In the case of note, we just employees contribution to RPF is not taxable. Employee contribution to RPF is not taxable. It is eligible for deduction under section 80C. However, such deduction shall not be available under the default tax regime under section 115 BAC, because under default tax regime deduction at TC is abolished. Abolished not the right word, withdrawn under the new tax regime, under the default tax regime under 115 BAC. So dear students, this question is also solved under the optional tax regime. Optional tax regime is also called normal tax provision of the act and old tax regime. Basic paid salary same will be taken, rupees 4 lakh. Dearness allowance 1,50,000. Dearness allowance, please note 1,50,000 dearness allowance is not given under the terms of employment. Commission is given and commission is also taxable. Entertainment allowance is received, it is also taxable and it will be deducted because Mr. Goyal is a government employee under section 16 subsection Roman 2nd. Employees contribution to RPF is deducted under section 80C. Medical expenses reimbursed 25,000. So 25,000 is included in the volume of the salary. Professional tax paid by the employer, employer जो पे करेगा वो ऐड कर दिया जाएगा.
एम्प्लॉय जो पेड करेगा वो ऐड कर दिया जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी ₹7,60,000, तो 7,60,000 ये आया। 4,00,000, 1,50,000, 1,40,000 और फिर 25,000, 1,000 की ये ऐड करने से 7,16,000 ये आया है। फिर इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस होगा, जबकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये 75,000 हो चुका है। बट इन द केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम या ऑप्शनल टैक्स रिजीम और नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में अभी भी ये 50,000 है। इन द केस ऑफ इंटरटेनमेंट बिकॉज मिस्टर गोयल इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट of entertainment allowance, actual received amount of entertainment allowance is 40,000, ये एक्चुअल रिसीव्ड हो गया। सेकंड है 1/5 ऑफ बेसिक पे। देखो बच्चों 1 बेसिक पे जो है वो 4 लाख है। 4 लाख का 1/5 जो होता है 80,000 आता है, और फिर मैक्सिमम लिमिट या स्टैच्यूटरी लिमिट 5,000 है। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही लेस होगा। तीनों में कम क्या है? 5,000 है, वो 5,000 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ लेस हो गया। प्रोफेशनल टैक्स वो 2,000 लेस होगा। 1,000 एम्प्लॉय पे किया है, 1,000 एम्प्लॉय पे किया है, तो कुल डिडक्शन जो लेस होगा 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। प्लीज नोट ऑन द स्लाइड 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 5,000 रुपये आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस, 2,000 एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो कुल 57,000 ग्रॉस सैलरी से 7,16,000 ग्रॉस सैलरी है, इसमें से 57,000 हमने लेस कर दिया, तो हाँ 6,57,000 आ गया। 6,57,000 वी कैन से, देखिए 7,16,000 से हाँ 57,000 जब लेस हुआ तो 6,59,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। नोट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF. Employee contribution to RPF is not taxable. It is eligible for deduction under section 80C up to ₹1,50,000. तो बच्चों under section 80C deduction is available for individual assessee as well as HUF assessee. HUF assessee इंडिविजुअल assessee को 80C के डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं। करीब 28-29 टाइप स्कीम्स आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C इफ assessee invest its amount in those types of scheme. And this deduction is based on the investment. यानी there are 2 types of deduction, investment based deduction and income based deduction. तो 80C is the investment based deduction. तो investment under 80C maximum deduction is allowable only up to ₹1,50,000. तो dear student, now I am sure you got each and everything regarding to the solution of case first. So I hope previously in comparison of the previously you got right, you got each and everything in right way, and any types of confusions or query, so without any hesitations contact to me, call me without any hesitation. So next I am going to solve the further case, and this case is case 2, which is related to the income computation of income from salary. So computation of income from salary, it is related to the case second. So in the case second में Mr. Hari who turned 71 years on 28th April 2024. 71 years means the assessee is senior citizen assessee. सीनियर सिटीजन असेसी, सुपर सीनियर सिटीजन असेसी और नॉर्मल असेसी। नॉर्मल असेसी, द असेसी एज इज नॉट मोर देन 60 years. दिस टाइप्स ऑफ असेसी इज कार्ड, दिस टाइप्स ऑफ असेसी इज कार्ड द नॉर्मल असेसी. If the assessee age is more than 60 years but not more than 80 years, so this types of assessee is called the senior citizen assessee. If the assessee age is 80 years or more, तो such types of assessee is called the super senior citizen assessee. तो assessee normal assessee, senior citizen assessee और
super senior citizen assessee, there are 3 types of assessee at the time of computation of tax liability. So in this question, Mr. Hari is age of 71 years. He is senior citizen assessee. 28 अप्रैल 2004 को वो 71 ईयर्स के हो गए. यू आर इन्फॉर्म दैट द सैलरी कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इज ₹10,20,000 एंड एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड 3,45,000. अब पूछे जा रहा है कंप्यूट द टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26. एज्यूम दैट मिस्टर हरी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन या सब क्लास 1A. तो डियर स्टूडेंट्स, in this question salary is received as well as arrears of the salary is also received by the employee. So now I am going to solve this question. This question is related to the Mr. Hari. Dear students, in this question you can see the slide. First column is related to the inclusion. First right is related to the including areas of salary, or second slide is related to the without including the areas of the salary. तो including the areas of salary 10,20,000 current year salary and areas of the salary 3,45,000. तो 10,20,000 and 3,45,000 total taxable amount rupees 13,65,000. तो in second column only 10,20,000 current year salary is given. Areas of the salary is not included because this column is related without including the areas of the salary. तो total amount of taxable including salary 13,65,000 और without including the area 10,20,000. तो income tax thereon 2,19,500, 1,16,000. How it is computed I will discuss in next slide. Health and education cess is also included at the rate of 4%. Dear student, in this question surcharge is not computed because surcharge is computed when the total income is exceed 50 lakhs. 50 लाख रुपए से ऊपर होता है तभी सरचार्ज कंप्यूट किया जाता है. अब 50 लाख से नीचे रहता है तो सरचार्ज की अमाउंट को कंप्यूट नहीं किया जाता है. तो इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी 13,65,000 और विदाउट इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ सैलरी ₹10,20,000. तो इट मीन्स इन बोथ केसेस taxable salary या total income is less than ₹50 lakhs. Income tax, how it is computed, I will discuss in next slide. Health and education cess at the rate of 4%. It is computed on the amount of tax. The tax is 2,19,500 or 1,16,000. 4% is computed on this amount. So 4% if it is computed, then it is included in the amount of the tax, and if the amount of health and education is included, so then finding value is called the total tax payable. So in both cases, in first case including the areas of salary, the total tax payable 2,28,280. In the case of without including the areas, 1,20,640. So we can say with if the areas are included, so then the tax amount is so high. If the areas are not included, the tax amount is so less. Dear students, this slide is related to the computation of tax. So computation of tax, this slide related to this those income which is exclusion is not including the areas of salary. Not including the area of salary, the total income is 10,20,000. So up to ₹3 lakh, no amount of tax because in this question assessee is 71 years. 71 years के जो assessee होते हैं उनको senior citizen assessee कहा जाता है. तो in the case of senior citizen assessee up to ₹3 lakh
टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड। तो फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख द टैक्स अमाउंट इज 5%। तो टैक्स अमाउंट इज 5%। तो 3 लाख टू 5 लाख का डिफरेंस जो है 2 लाख हुआ। तो 2 लाख का 5% 10,000। फिर नेक्स्ट फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख द टैक्स रेट इज 20%। तो 5 लाख से 10 लाख के डिफरेंस 5 लाख हुआ। 5 लाख का 20% 1 लाख आ गया। फिर बैलेंस अमाउंट तो 10 लाख 20,000 ये आपका पूरा का पूरा टोटल इनकम है, जिसमें से आपका 2 लाख और 5 लाख तक का टैक्स निकल गया। 2 लाख का टैक्स 10,000 आया, 5 लाख का टैक्स आपका 1 लाख आया और 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बाकी जो बैलेंस बचा वह आपका नेक्स्ट स्लैब में जाएगा 10 लाख के ऊपर एक्सेस एंड एबव 10 लाख्स। तो 10 लाख से एक्सेस एंड ओवर 20,000 है। 20,000 का डियर स्टूडेंट देखिए ये 30%। वी कैन से यू कैन से 20,000 का 30% 6,000, 5 लाख का 20% 1 लाख और 2 लाख का 5% 10,000 और 3 लाख रुपए तक का कोई टैक्स इसमें नहीं है। तो आप 10,000 1 लाख 6,000 ये तीनों को हमने जोड़ा। जोड़ने के बाद जो फाइंडिंग वैल्यू आई वह आपकी कहलाएगी टोटल टैक्स की अमाउंट। और इन दिस क्वेश्चन सरचार्ज इज नॉट इम्पोज बिकॉज टोटल इनकम इज लेस देन ₹50 लाख। तो सरचार्ज 4% कंप्यूट करेंगे 1,16,000 का 4% 4,640। तो 4% टैक्स के अमाउंट पे ऐड करने के बाद टोटल फाइंडिंग वैल्यू इज कार्ड द 1,20,640। डियर स्टूडेंट्स, second topic is related to the computation of income from salary, including areas of the salary। तो including areas of the salary means इसमें areas salary included किए हैं। तो areas of the salary advance salary is also taxable whenever it is received। जब ये रिसीव होता है, जब ये प्राप्त होता है तो उस समय इसको टैक्सेबल माना जाता है, ये टैक्स इस पर चार्ज किया जाता है। तो वी कैन से up to ₹3 lakh no amount of tax because Mr. Assisi age is 71 years। जब मिस्टर असीसी की एज 71 ईयर्स का है तो उस समय 3 लाख रुपए तक की टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है, क्योंकि मिस्टर असीसी जो है वो सीनियर सिटीजन असीसी है। फिर 3 लाख से 5 लाख 3 लाख से 5 लाख का जो डिफरेंस होता है वो 2 लाख होता है। तो देखिए देख सकते हैं, ये देखिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील हो गया। तो 3 लाख से 5 लाख अप टू 5 लाख नहीं, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख टू 5 लाख में डिफरेंस कितना हुआ 2 लाख हुआ। 2 लाख का 5% 10,000 अमाउंट आ गया। और फिर अप टू ₹10 लाख 20% है। तो 5 लाख तक का टैक्स 10,000 आया है। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है 5 लाख। तो 5 लाख का 20% 1 लाख। और फिर अगर बैलेंस यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 लाख तक का जो टैक्स है वह 1,10,000 है। और बैलेंस कितना बचा 13,65,000 इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी था, टोटल इनकम था, जिसमें से 5 लाख रुपए तक का टैक्स 10,000 और 10 लाख रुपए तक का टैक्स जो है वो 1 लाख हो गया। बाकी जो अमाउंट रिमेनिंग होगा, बाकी अमाउंट जो बचेगा वह आपका 13 लाख। देखिए 13,65,000 माइनस 10 लाख। ये 10 लाख कहाँ से आया 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2 लाख का टैक्स आपका 10,000 और 5 लाख का टैक्स 20%। तो 3 लाख 2 लाख और 5 लाख इन तीनों का टोटल कर देंगे, ये 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख तक का जो टैक्स हुआ है वो आपका 1,10,000 हुआ है। 10 लाख के ऊपर जो अमाउंट है वो 3,65,000 है। 3,65,000 का 30%, 3,65,000 का 30% जो होगा 1,09,500। तो 1,09,500 ये पूरा का पूरा जो टैक्स की अमाउंट आई है वो 13,65,000 तक आई है। तो 10,000 ये 10,000 वी कैन सी ये 2 लाख का टैक्स है, ये 1 लाख 5 लाख का टैक्स है और ये 1,09,500 3,65,000 का टैक्स है। तो 13,65,000 का जो टैक्स अमाउंट है वह
2,19,500 है, तो 2,19,500 टैक्स हो गया. सरचार्ज इज नॉट कैलकुलेटेड बिकॉज द टोटल इनकम इज नॉट एक्सीड ₹50 लाख. अगर 50 लाख के ऊपर होता तो तब वी कैन से सरचार्ज विल बी इम्पोज. बट इन दिस क्वेश्चन टोटल इनकम is only 13,65,000. So out of 13,65,000, the total tax amount is 2,28,280. This is the total payable of the tax. So we can say including arrears and not including arrears. So now concern is that arrears of the salary, advance salary is also taxable and it is also included at the time of the computation of income from salary. So in this question the tax is computed on the two types of way. First, without including arrears, and second, including the arrears. When arrears is included, the tax amount is 2,28,280. If the arrears is not included, so then total tax payable is 1,20,640. So now we can say near about 1,18,000 का डिफरेंस आ रहा है. दिस डिफरेंस इज लेट डाउन विद ड्यू टू रीजन ऑफ 3,45,000 एज एरियर्स ऑफ द सैलरी. तो डियर स्टूडेंट, आई होप you all got each and every point regarding to the solution of this question. In this question we got there are three types of assessee. ऐसे असेसी जिनकी एज 60 साल के नीचे है उनको जनरल असेसी कहा जाएगा. ऐसे असेसी जिनकी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है उनको सीनियर सिटीजन कहा जाएगा. ऐसे असेसी जिनकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है तो उनको 80 साल या उनसे ज़्यादा है तो उनको कहा जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन असेसी. तो जनरल असेसी के लिए 2.5 लाख रुपए तक अप टू ₹2,50,000 नो टैक्स इज लेविड. From 2,50,000 to 5 lakh, the tax rate is 5%. From 5 lakh to 10 lakh, the tax rate will be 20%. Excess and above to 10 lakh, the tax rate will be 30%. So this types of tax rate is described by me under the optional tax regime. Under the optional tax regime are shifting out default tax regime. So in the case of optional tax regime, the surcharge is also imposed, but in this question surcharge is not imposed. In the case of including the including the salary and not including the salary, because the total income is not excess to ₹50 lakhs. So in the case of this question, I hope each and every points are got by all of you. If any confusion, any query, so without any hasten you can contact, you can call to me. So thanks to each and everyone for listening, for giving the attention, for nice listening. Thanks to all of you once again.